It's a bacterial infection that can cause it and become infection in different parts of the body. And remember, I told you that the biggest reason of septic shock in our country is illegal abortion. Septic shock is extremely important to the clinician because other than cardiogenic shock, septic shock is the most frequent cause of shock-related death in a modern hospital. Some of the typical causes of septic shock is number one, peritonitis caused by spread of infection from the uterus and fallopian, sometimes resulting from instrumental abortion performed under unsterile conditions. So illegal abortion unsterile conditions में होता है, जिसकी वजह से peritonitis हो जाता है और septic shock. Peritonitis resulting from rupture of GIT, sometimes caused by intestinal disease and sometimes by wounds. Generalized bodily infection resulting from spread of skin infections such as streptococcal or staphylococcal. कई दफा बेटा स्ट्रेप्टोकॉकल स्टेफिलोकॉकल इन्फेक्शन भी अगर इतनी ज्यादा हो जाए तो वो शॉक कॉज कर सकते हैं. जनरलाइज्ड गैंग्रीनस इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम gas gangrene vessel spreading first to peripheral tissues and finally by way of blood to the internal organs, especially the liver. अब ये आपको सिनेरियो आ सकता है डायबिटिक फुट जो होता है ना, जिसमें जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है उसमें गैंग्रीन हो जाता है. ठीक है, तो आपको वहां ये भी सिनेरियो आ सकता है कि एक पेशेंट को गैंग्रीन हो गया हुआ है फुट का, तो क्या हो सकता है, और आपसे शॉक को एक्सपेक्ट करेंगे दैट यू शुड नो सेप्टिक शॉक. Infection spreading into the blood from the kidney or urinary tract often caused by swollen bacilli. Septic shock के कुछ special features हैं. Let's see what. High fever often marks vasodilation throughout the body. High cardiac output in perhaps half the patients caused by arteriodilation in the infected. अच्छा ये ना MCQ बड़ा typical MCQ है. Is what is high cardiac output shock? ठीक है, तो आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा वो सेप्टिक शॉक में हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर होता है. ठीक है, caused by arteriolar dilation in the infected tissues and high metabolic rate and vasodilation elsewhere in the body, resulting from bacterial toxin stimulation of cellular metabolism and from high body temperature. ये high body temperature की वजह से high cardiac output है. ठीक है, बट अल्टीमेटली तो फिर जब फेलियर हो जाएगा ब्रेन का तो फिर इन्फेक्शन है, फिर फॉल करना. Sludging of the blood caused by red cell agglutination response to degenerative infections. Then development of micro blood clots. Widespread areas of the body condition called disseminated intravascular coagulation. वो जो मैंने आपको भी बताया था छोटी सी कहानी, वो इसीलिए थी कि उस बच्ची को DIC ही हुआ था. ठीक है, लेकिन that child recovered from irreversible shock into recovery and we discharged that child. Also, this causes the blood clotting factors to be used up so that hemorrhaging occurs in many tissues, especially in the gut wall of the intestinal tract. In early stages of septic shock, the patient usually does not have signs of circulatory collapse, but only signs of severe bacterial infection. As the infection becomes more severe, circulatory system usually becomes involved either because of direct extension of the infection or secondarily as a result of toxins from the bacteria. अब आपको पता है कि आप शुरू में हमने क्या बताया था कि one factor that is going to convert the compensated shock into uncompensated shock is cardiac depression. और cardiac depression किसी वजह से हो रही थी endotoxin. इसी यही वजह है कि सेप्टिक शॉक इज सो डेंजरस दैट जो एक फैक्टर है जिसकी वजह से किसी तरह शॉक संभाले में नहीं आता वो एंडोटॉक्सिन है, और सेप्टिक शॉक में तो पहले ही वो सेप्सिस हुआ पड़ा है. तो सेप्टिक शॉक सबसे ज्यादा कॉमन है, कॉमन कॉज ऑफ फर्टिलिटी है. ठीक है, तो क्या होगा, टॉक्सिन्स फ्रॉम द बैक्टीरिया विल कॉज रिजल्टेंट लॉस ऑफ प्लाज्मा इनटू द इन्फेक्टेड टिश्यूज थ्रू डिटेरियोरेटिंग blood capillary walls. There finally comes a point at which deterioration of the circulation becomes progressive in the same way that progression will occur in all types of shock. तो अब ये सेप्टिक शॉक जब भी आपको आएगा एज अ क्वेश्चन, तो उसमें ये जो 4-5 चीजें स्पेशली सेप्टिक शॉक की लिखी है ना, ये आपको लिखी है. ठीक है, क्योंकि ये रीजंस और ये जो विशियस साइकिल्स हैं ये बाकियों में नहीं है. ठीक है, क्योंकि बाकियों में इन्फेक्शन तो नहीं है ना, तो
सेप्टिक शॉक में आपको ये एडिशनल चीजें लिखनी पड़ेगी। अच्छा, ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी? शॉक, blood and plasma transfusion if the person is in shock caused by hemorrhage. Best possible therapy is usually transfusion of whole blood. क्यों whole blood? क्योंकि आपको नहीं पता कि clotting factors कितने यूज अप हो गए हैं, आपको नहीं पता कि प्लेटलेट्स कितने कम है, तो आप whole blood लगाओ, ठीक है, ना सेल्स लगाओगे ना प्लाज्मा लगाओगे, उसको whole blood लगाओ। If the shock is caused by plasma loss, best therapy then is administration of plasma. When dehydration is the cause, administration of an appropriate electrolyte solution can correct the shock. Plasma can usually substitute adequately for whole blood because it increases the blood volume and restores the hemodynamics. But plasma cannot restore the normal hematocrit. So cells तो नहीं आ सकते ना, but the human body can usually stand a decrease in hematocrit to half normal before serious consequences result. तो आपने क्या करना है, आपने किसी ना किसी तरह का फ्लूइड लगा देना। सबसे बेस्ट तो है कि ब्लड लगाओ, नहीं अवेलेबल ब्लड तो क्या लगाओ, प्लाज्मा लगाओ, नहीं अवेलेबल प्लाज्मा तो सिंपल आप उसको इलेक्ट्रोलाइट या सिंपल रिंगर्स लगा दो, रिंगर सोल्यूशन में सारे इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी नहीं मिलता तो सिंपल नॉर्मल सही लाइन लगा दो। क्यों? क्योंकि कार्डिक आप उसको स्ट्रोक वॉल्यूम तो करेक्ट करो ताकि कार्डिक आउटपुट तो करेक्ट हो सके, ठीक है। Sometimes plasma is unavailable. In these instances, various plasma substitutes have been developed that perform almost exactly the same hemodynamic function as plasma. One of these is dextran. Okay? Then, फिर क्या करो आप sympathomimetic drug दो, a drug that mimics sympathetic stimulation. तो दिस ड्रग सिम्पथोमाइमेटिक है ना, तो अगर आपकी सिंपथेटिक्स बेकार हो गए हैं तो उसको मिमिक करने के लिए, मिमिक का क्या मतलब है, कॉपी करना, ठीक है। तो हम सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग देंगे और वो कौन सी है जी, नॉरएपिनेफ्रिन एंड नेपथेरेफ्रिन एंड अ लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग दैट हैव द सेम इफेक्ट एज नॉरएपिनेफ्रिन. In two types of shock, sympathomimetic drugs have proved to be specially beneficial. Number one is न्यूरोजेनिक शॉक। क्यों? क्योंकि उसमें तो प्रॉब्लम ही है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिवियरली डिप्रेस, ठीक है। और दूसरा है जी एनाफिलेक्टिक शॉक, ठीक है। उस क्यों क्यों क्योंकि उसमें भी वेजोडाइलेशन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखो आइदर नॉरएपिनेफ्रिन और अदर सिंपैथेटिक ड्रग इज ऑफ्टन लाइफ सेविंग। अदर थेरेपीज क्या हो सकती है कि ट्रीटमेंट बाय हेड डाउन पोजीशन है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं कि पेशेंट की टांगे ऊंची कर, तो इसीलिए है कि if the head is at least 12 inches lower than the feet, that helps tremendously in promoting venous supply. Oxygen therapy, because major deletions effect of both types of shock through the delivery operation to the tissues, giving the patient oxygen to breathe can often be of help. But this is frequently far less efficient than might be expected because the problem of most types of shock is not inadequate oxygenation, but inadequate transport of blood after it is oxygen. लाइफ सेविंग ड्रग्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, स्टीरॉइड्स आपने सुना होगा, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। क्यों? पीछे हमने पढ़ा था ना सेल्यूलर लेवल पे जो डिटीरियरेशन थी कि उसमें लाइसोसोम्स जो हैं वो अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो हैं वो रिलीज कर देंगे और वो नॉर्मल सेल्स में रिलीज करेंगे तो क्या होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ना। तो आपने उसको स्टेबलाइज करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स frequently increase the strength of the heart in late stages of shock. Why? Because they stabilize lysosomal cell membranes. Plasma cells preventing degradation from the source. Glucocorticoids might aid in the metabolism of glucose by severely damaged cells. All right, now we have coronary circulation, because this is
with the lectures with you. ठीक है, shock हमने खत्म कर दिया है. Let's see why is coronary blood supply so important and what are the aspects of coronary circulation which is different from the rest of the circulation. Main coronary arteries lie on the surface of the heart. And why is the mic on? The main coronary arteries lie on the surface of the heart and smaller arteries then penetrate from the surface into the cardiac mass. ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया होगा. थोरेक्स आप लोग थोरेक्स कर चुके हैं ना? थोरेक्स कर लिया है. So you know कि कैसे सप्लाई होगा. It is almost entirely through these arteries that the heart receives its continuous blood supply. Only वही है. Same है. अच्छा. So only the inner 1/10 millimeter of the endocardial surface can obtain sufficient nutrition directly from the blood inside the cardiac tube. ये MCQ क्वेश्चन है बेटा कि कितना जो एरिया होता है एंडोकार्डियम का, ये कौन सी सरफेस होती है ब्लड की जो कि ऑक्सीजन ले सकती है. इसका मतलब है एंडोकार्डियम तो सेव हो गई. इट इज एक्चुअली द सब एंडोकार्डियल एरिया जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेशन होती है ऑक्सीजनेशन की. क्यों? क्योंकि एंडोकार्डियम को तो मिल गई उससे ल्यूमन में जो ब्लड है उससे ऑक्सीजन, और जो बाकी का ब्लड है वो पेरिकार्डियम से आ रहा है, एपिकार्डियम से अंदर आ रहा है. ठीक है, तो द एरिया विच इज कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर ब्लड ऑक्सीजनेशन इज द सब एंडोकार्डियल एरिया. Most of the coronary venous blood flow from the left ventricular muscle returns to the right atrium by the coronary sinus, which is 75% of the total coronary blood flow. And most of the coronary venous blood flow from the right ventricular muscle enters through smaller anterior cardiac veins. अभी हम ऐसा तो सारा Sebastian veins वगैरह ये सारा अब पढ़ चुके हैं. अच्छा, फ्लो कैसे? Resting coronary blood flow in the human being is 225 millimeters per minute, which is 4 to 5% of total cardiac output. MCQ question again कि कितने percentage जो है ना वो coronary flow है. During strenuous exercise, the heart in the young adult increases its cardiac output 4-fold to 7-fold, and it pumps its blood against the higher than normal arterial pressure. Consequently, work output of the heart increases several severe and the very severe conditions may increase 6-fold to 9. At the same time, coronary blood flow increases 3-fold to 4-fold to supply the extra nutrients needed by the heart. हाँ, अब ये बेसिक चेंजेस जो है ना बेटा, ये जरूर आपने याद रखने. यही असल चीज है जो आपको पता होगी. ये देखो, basic flow of blood through the coronary capillaries of the human left ventricle during cardiac cycle in the systole and in the diastole. अब आप देखो कि सिस्टली में कॉर्नरी ब्लड फ्लो नहीं होगा. यही सबसे बड़ा फर्क है बिटवीन द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्लड फ्लो इन द कॉर्नरी आर्टरीज. दैट blood flow is going to be compromised in systole, and in diastole there is going to be increase in blood. The reason is very simple, because all these arteries lie in between the muscles at right angles. Look at this. This is a special feature of the... I'm sorry to interrupt you, हम का लेक्चर है, डॉक्टर फरजाद बुला रहे हैं.
डॉक्टर प्रसाद से ये है कि अभी आप थोड़ी देर वेट करें, मैं Okay, ma'am. all right. So I'm just going to take 10 or 15 more minutes and then we can continue on. Epicardial coronary arteries are going to give you blood and they are always going to divide at right angle. Okay, look at the beauty of the distribution. Okay, diagram of epicardial, intramuscular, and subendocardial coronary vasculature. Right, so all these are going to divide at right angle. So during diastole, the cardiac muscle relaxes and no longer obstructs blood flow to the left ventricular muscle capillary, so that blood flows rapidly during all of the diastole. Blood flow to the coronary capillaries of the right ventricle also undergo phasic changes, but because the force of contraction to the right ventricle is less than that of the left ventricle, inverse phasic changes are only partial, in contrast to those in the left. ठीक है, तो ये जो बनाया था डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है, this is more so in the left ventricle. ठीक है, इसीलिए इसका कैप्शन लेफ्ट ventricle. राइट वेंट्रिकल में भी हो गया होगा, बट नॉट सो ड्रास्टिक. Epicardial versus subendocardial coronary blood flow. Effect of intramyocardial pressure. On the outer surface of the epicardial coronary arteries that supply most of the muscle, smaller intramuscular arteries derived from the epicardial arteries penetrate the muscle, supplying the needed nutrients. Lying immediately beneath the endocardium is a plexus of subendocardial arteries. Now, during systole, blood flows through the subendocardial plexus on the left ventricle, where the intramuscular coronary vessels are compressed greatly by ventricular muscle contraction. Tends to be reduced. Okay? So, if there is a question, if you get an MCQ that what is the reason कि सब एंडोकार्डियल प्लेक्सिस ही सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है, उसकी ये वजह है कि कंप्रेशन में वेंट्रिकुलर मसल कंट्रैक्शन के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो टू द सब एंडोकार्डियल प्लेक्सिस इज रिड्यूस्ड, but the extra vessels of the सब एंडोकार्डियल प्लेक्सिस normally compensate for this. Now we come to the control of coronary blood flow. अब ये आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ कि control of coronary blood flow is local. That is the most predominant. Local muscle metabolism is the primary controller of coronary. Blood flow through the coronary system is regulated mostly by local arteriolar vasodilation in response to cardiac muscle needed for nutrition. Whenever the vigor of cardiac contraction is increased, regardless of the cause, the rate of coronary blood flow will also increase. ठीक है, तो coronary blood flow अगर sympathetic या किसी भी vasoconstrictor की वजह से कंस्ट्रिक्ट होने को होता है तो वो नहीं होता. क्यों? क्योंकि लोकल मसल मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू प्रीडोमिनेट. Conversely, decreased heart activity is accompanied by decreased coronary blood flow. This local regulation of coronary blood flow is almost identical to that occurring in many other tissues of the body, especially in the skeletal muscle. Now, what is the major factor in the local regulation? Oxygen demand. Blood flow in the coronary arteries usually is regulated almost exactly in proportion to the need of the cardiac musculature for oxygen. So normally about 70% of oxygen in the coronary arterial blood is removed as the blood flows through the heart muscle. Because not much oxygen is left, very little additional oxygen can be supplied to the heart musculature unless the coronary blood flow increases. Fortunately, the coronary blood flow does not increase almost in direct proportion to any additional metabolic consumption of oxygen. First KG, again adenosine, in the presence of very low concentration of oxygen in the muscle cells, large proportion of cells ATP degrades to AMP. And small portions of these are further degraded to adenosine, and it is going to be, it will result in a massive increase in local coronary blood. ठीक है, अदर अब देखो कि स्मॉल पोर्शंस का है उसमें. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एडिनोसिन फटाफट ज्यादा लूज हो जाएगी तो क्या होगा, हम तो रिप्लेनिश ही करने को कोई चीज ही नहीं होगी, किसके साथ फॉस्फेट लगाएं. तो जैसे ही एएमपी बनेगी तो एएमपी क्या करेगी जी, मैसिव इंक्रीज इन लोकल coronary blood. Others include adenosine phosphate compounds, potassium ions, hydrogen ions, carbon dioxide, bradykinin, prostaglandin, nitric oxide.
ये भी आपने बेटा याद रखने हैं, बिकॉज ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोकल कॉरोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज है. अच्छा, now what is the nervous control of coronary blood? Stimulation of the autonomic nerves to the heart can affect coronary blood flow both directly and indirectly. The direct effects result from action of the nervous transmitter substance acetylcholine from the vagus nerve and norepinephrine from the sympathetic nerves on the coronary vessels themselves. The indirect effects resulting from secondary changes in the coronary blood flow cause the increase or decreased activity of the heart. अब ये indirect है, क्यों? क्योंकि directly it is not affecting the coronary, which are mostly opposite to the direct effect, play a far more important role in normal control of coronary blood. Thus, what happens in sympathetic stimulation? It releases epinephrine, norepinephrine. This is going to cause increase in heart rate and heart contractility, as well as increase in the rate of metabolism. And this increase in the rate of metabolism is going to increase the coronary blood. In turn, increased metabolism of the heart sets off local blood flow regulation mechanism for dilating the coronary vessels, and the blood flow increases approximately in proportion to the metabolic needs of the muscle. In contrast to this, vagal stimulation with its release of acetylcholine slows the heart and has a slight depressive effect on heart contractility. These effects in turn decrease cardiac oxygen consumption and therefore indirectly constrict the coronary arteries. There is extensive sympathetic innervation of the coronary vessels. Norepinephrine and epinephrine can have either vascular constrictor or vascular dilator effects. Q will depend on the number of type of receptors present. अब ये जो बेटे हार्ट के रिसेप्टर्स है ना, इसके ऊपर एमसीक्यू जरूर आता है, ठीक है? तो ऑटोनॉमिक सर्विस सिस्टम वैसे तो आपके सेकेंड ईयर के कोर्स में, लेकिन बिकॉज आपके कोर्स में हार्ट है और सर्कुलेशन है, तो ये वाले जो रिसेप्टर्स है ना, इनके ऊपर सवाल आ सकता है. Constrictor receptors are also called alpha receptors and dilator are beta. Both alpha and beta receptors will exist in the coronary vessels. So, epicardial coronary vessels have a preponderance of alpha receptors, whereas the intramuscular arteries have a preponderance of beta receptors. अब ये भी आपको रीजन बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो हैं कंस्ट्रिक्टर्स, और वो तो सिर्फ एपिकार्डियल कॉर्नरी वेसल्स में. तो हमने लोकल कंट्रोल तो हमें इंट्रा कार्डियल चाहिए ना, तो वेरी गुड, इंट्राकार्डियल तो हमारे पास है ही बीटा, ठीक है. In some people, alpha vasoconstrictor effects seem to be disproportionately severe, and these people can have vasospastic myocardial ischemia during periods of excessive sympathetic drive, often resulting in angina. हाँ, ये जो आप फिल्मों में और ड्रामों में दिखाते हैं ना कि जी एंजाइनल पेन हुई, खास तौर पे वालिद साहब को जब उनको पता चला कि उनके बेटे और बेटी ने शादी कर ली है, तो ये जो है ना, ये बहुत थोड़े लोगों में होता है प्लीज. तो डोंट ट्राई टू मिमिक इट, और ये ज्यादा इस चीज को ना ड्रामों पे नहीं रहने दें, यूजुअली ये लोगों में नहीं है. Metabolic factors, especially myocardial oxygen consumption, are the major controllers of myocardial blood flow. ठीक है जी, ये चीज आपने याद रखनी. Whenever the direct effects of nervous stimulation alter coronary blood flow in the wrong direction, metabolic control of coronary flow overrides the direct coronary nerve effects within seconds. ये पैराग्राफ आपने बेटे रट्टा लगा लेना है कि जब भी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ नर्वस स्टिमुलेशन अगर वो वेसोकंस्ट्रिक्शन का आता है, तो क्या होगा कि मेटाबॉलिक कंट्रोल विल ओवरराइड. हाँ, ये भी बड़ा जरूरी है, और ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन, ये आपको यूजुअली बायोकेमिस्ट्री में आप इसको मिस कर जाते हैं. अंडर रेस्टिंग कंडीशंस कार्डियक मसल नॉर्मली कंज्यूम्स फैटी एसिड्स, ठीक है, नॉट कार्बोहाइड्रेट. So this is an MCQ question. However, as is also true of other tissues, under anaerobic conditions, the cardiac metabolism must fall on anaerobic glycolysis. ठीक है, तो anaerobic glycolysis जो है ना, वो some situations में. Unfortunately, glycolysis consumes tremendous quantities of blood glucose and at the same time forms large amount of lactic acid in the cardiac tissue, which is probably one of the causes of cardiac pain in ischemic conditions.
More than 95% of the metabolic energy liberated from foods is used to form ATP in the mitochondria. This ATP in turn acts as a conveyor of energy in the cardiac muscle vasculature. Adenosine is believed to be one of the substances that causes dilation of the coronary arterioles during coronary hypoxia. Loss of adenosine has a serious cellular consequence within as little as 30 minutes of severe coronary ischemia as occurs after myocardial infarct. About one half of the adenine base can be lost from the affected cardiac muscle. इसी वजह से नेक्रोसिस हो जाए, ठीक है ना. मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से कार्डियक एरिया पैची कार्डियक नेक्रोसिस और मायोकार्डियल इंफार्क्टेड एरिया क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस एरिया से एडेनिन बेस निकल जाएगा. और जब एडेनिन बेस निकल जाएगी तो अगर आप रिप्लेनिश करते भी हो तो वहां से एटीपी कहां से आएगी? तो फिर इंफार्क्ट होना ही है ना शुरू. 30 or more minutes के बाद relief of ischemia may be too late to save the lives of cardiac cells. ठीक है. This almost certainly has one major causes of cellular cardiac death during myocardial ischemia. अच्छा, अब I think we'll stop here. Ischemic heart disease आपको डॉक्टर बुशा पर, ठीक है. So this finishes my lectures with you, and the rest will be taken up by Dr. Bush.